Good afternoon, all. Can Hi, someone sir. please Good afternoon. confirm? Hi, can someone please confirm if my screen is visible to you? Can you guys hear me? Yes. Yes, sir. Yes, Silver. Great. So let's get started quickly. Before that, do you guys have any questions, any doubt, anything which you want to ask before we proceed and we start migration? Do you guys have any doubts in your mind? Okay, should I take that as a no? Well, this Azure AZ 109 इसमें जो syllabus है उसमें Kubernetes नहीं है ना? There is no 109 actually. There's AZ 900, fundamental, AZ 104, 104, okay. We are administrator. learning No, 104. 104, yes. So no, Okay. there is no Kubernetes in this. Kubernetes is Kubernetes. purely DevOps topic, automation DevOps. But still, if you guys want, we'll do that one. But एक सेशन में वो होने वाला थोड़ा है सा नहीं. समरी, हाँ थोड़ा बहुत या फिर about कुछ आइडिया उसके बारे में. I can cover that, but एक सेशन में कुछ नहीं होगा. कोई आप लोगों को कुछ ऐसा आइडिया अच्छा, मिलेगा नहीं या फिर जिससे आप आपके पास इंटरव्यू उसके में बारे बोल. में कोई वीडियोस होंगे जो आप शेयर कर सकते हो. वीडियोस आई शेयर, बट मोर देन वीडियोस आई ट्रस्ट कि मैं खुद ही बता दूं. आई कैन डू दैट. वो मैं बता दूंगा एक सेशन में, बट नेवर हम्म ट्राई दैट इन योर इंटरव्यू के एक सेशन के बाद हाँ मुझको कुबरनेटिस आता है, उसमें इतनी सारी उसके आगे चीजें अच्छा. होगी. then you won't understand. It's better to deny that I have not worked on Kubernetes. It's completely fine. And ओके. when you, if you have this one, your portal, you can see my screen, you can try Kubernetes services here. Kubernetes cluster, you can try, maybe I'll take a session on this, but that's definitely not a part of administrator. अच्छा, Kubernetes ओके. container, ये सब जो है आपका DevOps में आ जाएगा. Okay, guys, so let's talk about migration. Then this is the last topic which we have. After this, we do have monitoring, but this is very simple. I mean, if you guys go through and read this once, you will understand कि मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग में मेट्रिक्स क्या है, लॉग्स क्या है. और एक आप 10 मिनट का वीडियो देख लोगे ना यूट्यूब पे, तो वैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा. स्टिल इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, विल कवर मॉनिटरिंग ऑल्सो, बट नॉट टुडे, आफ्टर माइग्रेशन. बट दिस वन, कम हियर ऑन दिस वन नोट, monitoring page, and this is more than enough for monitoring. Apart from this, Azure VDI, it's definitely not there in AZ104. It's altogether a different paper, AZ400. वो सब हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पर. Okay, experience and scenarios, yes, this is useful based on whatever we have been discussing, based on whatever we have been learning. AZ104 के हिसाब से ये है experience and scenarios, so you guys can go through this once. If whatever you understand, it's fine. नहीं समझ में आया तो भी that is okay. This is the main file you should be following. August 2023 batch questions. Here I have given scenarios, batch के questions, जो important चीजें हैं वो सब यहाँ पर दे रखा है. So please make sure you follow this. This is outdated. Do not follow this one. It has something, but it is outdated. So don't follow this. Uh, that's fine. This is freelancing. A little bit of freelancing work. Sometimes I assign to one of my previous batches. I found 2 or 3 good people, so I did assign it to them. If you guys are comfortable, feel free to check this once. थोड़ा सा समझ में आएगा काम कैसे होता है. If you don't understand completely, ignore this outdated. Follow this page religiously. This is what we have, everything latest जो हमने प्रैक्टिस की, टास्क किया, जो जो क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर है. Follow this. And for to revise topics, we can again go back here, Azure Active Directory. You'll get all topics related to Azure Active Directory. Azure Compute, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा. Compute, Azure Network, you'll get everything here about the network. Then storage and backup, you will get everything here of storage and backup. Load balancer यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को. I showed you one load balancer and I asked you to do application gateway and traffic manager. I'm not sure if you guys have done it or not. If you have not, please try doing that. Approach and logic सब कुछ सेम है, बस आपको load balancer कहेगी, application gateway select करना है. पैच सर्विसेज हमने एक दो की है, लाइक अजूर फंक्शन ऐप, लॉजिक ऐप. यहाँ पर आके आप एक बार डिफरेंसेस पढ़ लो लॉजिक ऐप और इसमें क्या है. दैट शुड बी मोर देन इनफ. वेब ऐप मैंने आप लोगों को बताया है एक बार. दैट शुड बी इनफ. उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं हम लोग इसमें पैच सर्विसेज में. बट दे डू आस्क, क्योंकि पैच का भी काफी डिमांड है. पैच इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट, सो पैच भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो. ठीक है, ठीक है. नेटवर्किंग, कंप्यूट एंड स्टोरेज एंड बैकअप एंड लोड बैलेंसर, एक्टिव डायरेक्टरी
and this Azure basics and subscription, we have done it in detail. ये बहुत major topics है, इसको हमने काफी detail में time spend कर रखा है. And based on all these topics, everything, the crucial and most important topic is migration, which we are going to start today. Today we may have only 2 sessions because I do not want to include any practical and theory. So we may have only theory part today, right? And we can start practical from next week. In practical, I will be having one machine on my AWS, and there I will have one machine, और उसमें मैं 2 virtual machines बनाऊंगा, एक Linux एक Windows, and I'll migrate those machines from Hyper-V to Azure. That's what I'll share with you guys. But practical we are gonna do next week. Next session, that will be our last session. In terms of technical, after that we will meet again, obviously, but for resume preparation, Naukri profile building, mock calls arrangement, then I'll get in touch with you guys on one-to-one basis. If I find that कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट है 5 साल के एक्सपीरियंस के ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, तो मे बी आई कनेक्ट विथ यू टू टुगेदर, ग्रुप वगैरह बना के, देन विल गेट इन टच लाइक इन दैट मैनर. बट इन टर्म्स ऑफ technical and portion, we will be done by next week. Okay, so let's get started guys with migration. This I explained it to you, वैसे ये मैं फिर से cover करूंगा when we talk about resume preparation and profile explaining. Because the moment you go for interview, the first question is, can you tell me something about yourself? Can you tell me something about your previous job? Can you tell me something about your previous role? Can you tell me something about your current role? What do you do? What do you do as an implementation engineer? What do you do as an Azure engineer? And one of the questions you guys saw, that they literally asked for a presentation, that what was your role in your previous project. So that is very important and crucial question. तो उसके आंसर में ये सब मैं कवर करूंगा कि आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो, सो हाउ डू यू हैव टू से कि टीम स्ट्रक्चर कैसे बताना है, हु to whom you were reporting, as in मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ आपको, वो सब आप अपनी कंपनी से खुद बताओगे. Designation and hierarchy sort of thing, that okay, I was a part of a team, I was an implementation team, we were 4 engineers, there were 2 architects, 1 lead architect, 1 project manager. इस तरह से मैं आपको डेजिग्नेशन हायरार्की बताऊंगा. नाम वगैरह वो सब आप अपनी कंपनी के हिसाब से सूटेबल जो भी हो ऐड कर देना उसमें. असेसमेंट किस तरह से होता है, उसको किस तरह से बोलना है, व्हाट इज क्लाउड रेडीनेस एटसेट्रा. ऑल दीज थिंग्स आई विल कवर अगेन व्हेन वी डिस्कस अबाउट योर प्रोफाइल बिल्डिंग एंड प्रोफाइल एक्सप्लेनिंग, कि स्टोरी कैसे बतानी है, कि 4 साल में आपने क्या किया, व्हाट ऑल हैव यू डन, वो कैसे करना है, दैट आई विल शो इट टू यू. यहाँ पर कुछ ये भी लिखा होगा दैट हाउ डिड दे डिसाइड वेदर टू रीहोस्ट और आर्किटेक्ट. ओके, ऑल दिस इज रिलेटेड टू माइग्रेशन, बट दीज आर स्टोरीज, नॉट द टेक्निकल थिंग, राइट. सो इस पे हम आते हैं बाद में. फर्स्ट वी विल check the technical. So let's start with the theory part, guys. What is Azure Migration or Azure Migrate? So Azure Migrate provides a centralized hub to assess and migrate Azure on-premises server, migrate to Azure on-premises server, infrastructure, application, and data. It provides the following. अब ये sentence क्या बोल रहा है? It is talking about Azure Migrate. Now, what is Azure Migrate? It is specifically talking about a tool. कल मैंने आप लोगों को बताया था, there is a tool called Azure Migrate. It is called Azure Migrate, एक specific tool है. So it is talking about that tool. कि what do you understand by that tool? Here it is. This is the tool they are talking about. कि इस tool में आपको क्या मिल रहा है? So that the tool we explained, कि इस tool में आपको क्या मिल रहा है. Now, is it the only tool we have for migration? No. But this is the only tool we have from Microsoft. This is the only tool we have from Microsoft which is free. We do not pay anything for this one. Yeah, all these things I'll explain it to you, don't worry. What does it mean? ये सब हम explain करेंगे practical में. As of now, I just want to show you something, hence I'm creating this. By the way, this is how exactly it starts. Whenever you want to do a migration, this is how exactly it starts. Migration का पहले एक project बनता है. ये सब बाय द वे आपको सब कुछ मिल जाता है आर्किटेक्ट टीम से, कि रिसोर्स ग्रुप कौन सा सिलेक्ट होगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, ज्योग्राफी ये क्या है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब. एज ऑफ नाउ आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन थिंग, हेंस आई एम क्रिएटिंग दिस. ओके, सो दिस वन Azure Migrate, ये उस टूल की बात कर रहा है. एज ऑफ नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द process of Azure migration. Azure Migrate is a tool. So what does it do? It provides a centralized hub
to access or to assess and migrate to Azure. What can you migrate to Azure? Your on-premise servers, infrastructure, application, and data. It provides following. क्या follow ये provide करता है यहाँ पर? A single portal to start, run and track your migration. When we go to that tool, we'll see कि वहीं से हम किस तरह से track कर सकते हैं, वहीं से हम किस तरह से start कर सकते हैं, stop कर सकते हैं, सब कुछ हम उसी tool से कर सकते हैं. Okay, now it says the range of tools, a range of tools for assessment and migration. Azure Migrate tools include Azure Migrate, एक जो हम देख रहे हैं वो tool, इससे आपका होता है discovery and assessment. Don't worry if you do not understand these things now. We are going to do that right now in 5 minutes. अभी as of now बस definition में पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ. ठीक है. So Azure Migrate tools है, what we can do, it's a discovery. What is discovery? I'll tell you. We can do assessment and we can do Azure Migration. ये सब हम कर सकते हैं Azure Migrate tool से. But there are multiple tools. There are other tools also which are called ISV. You remember this short form? They may ask you, have you ever worked with any of the ISV? You can say yes or no depending on your understanding. अभी कितना आप लोगों को समझ में आता है? If you understand only Azure Migrate tool, say no, I have not worked with any ISV. I have worked with Azure Migrate tool only. अगर थोड़ा आपको समझ में आता है तो then you can say yes, I have worked on Azure Migrate tool and plus ISVs. उसमें से एक दो का नाम आप बता सकते हो. I will explain one of them. ISV का full form क्या होता है? Independent Software Vendor. So what is that? यहाँ पर जो मैं ये पूरे Azure Migrate tool की बात कर रहा हूँ, look at this. This is Azure Migrate tool for assessment, and this is Azure Migrate tool for migration. So it is called Azure Migration tool. It is called Azure Assessment tool. In overall, it is Azure Migrate tool. Okay, this is how it is. Now, if I want to do a migration or start something, it's not necessary that I should take only Azure Migration tool. I can use some other tools also. Now, what are those tools? We'll see when we do the next practical or whenever we do the practical. वो लिस्ट आपको जो है यहाँ पर पूरी दिख जाएगी, that where are you bringing it from ये सब मिल जाएगा. उसके बाद आपको लिस्ट मिल जाती है that कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको. Is it only Azure Migrate tool आपको ये करना है या Azure Migrate tool के अलावा कोई और यूज करना है? That you can decide. Let me see if it is here. By the way, you can migrate your servers, database, and web app from here. You can migrate your database from here. You can migrate your web app from here. You can migrate your data boxes from here. We'll see that. Don't worry. वो सब हम लोग देखेंगे. So if I go here, let me check. Yeah. Look at this. So Azure Migrate tool, it's a free tool. It's an inbuilt tool. It is recommended by Microsoft. Most of the time, you can claim that I have worked on Azure Migrate tool. But if someone wants that more than Azure Migrate tool, also you want something. So we have this one, Cloudomize, and it is good for a cloud assessment. One more thing, can you do assessment using Azure Migrate tool and do migration using one of these tools? Yes. Can you do assessment using one of those tools and do migration using Azure Migrate tool? Yes. Can I do assessment using this tool and migration using this tool? Yes. So there is no compulsion or there is no condition कि आपको assessment भी हमसे ही करना है और migration भी हमसे ही करना है. Is this point clear to everyone? Yes, Fulman. Okay. So I will be showing it to you in detail thoroughly, one tool, which is Azure Migrate tool, and a little bit of details I'll show you of Current. Current, I do have reports of Current to show from one of my freelancing job. Yesterday's report, which I was showing, in that project also we use Current. 90% I'll show you the work on Azure Migrate tool and a little bit on Current. You can claim that I have worked on Azure Migrate tool and Current. If you have good lesser experience, like 2-3 years, 4 years maximum, you can say I've worked only on Azure Migrate tool. I've not worked on ISVs, but I'm aware of them, that there are these ISVs. दो चार का नाम आप ले सकते हो. Okay, I know that there is Turbonomic is there, Cloud Current is there, so you can use them. Right? But all of these are paid services. Azure Migrate tool is free. Pricing, etc., you can come here and see. No one will ask you pricing, by the way, but you can come here and check.
Similarly, I can do the assessment from here using one of those tools, and I can do migration using one of these tools. Current supports migration and assessment both. For migration, we have Carbonite. Carbonite is there in assessment also, but these are different tools. Maybe Zerato was not there in assessment. I guess you can check this, but this is how you can explain that these are two tools we am aware of. Two category of tool. One is Azure Migrate tool, and another category is ISV, Independent Software Vendors. And under that, we have these many tools. We can use anyone. These are paid. Azure tool is free. Is this clear to everyone? ये असेसमेंट का मतलब क्या है We'll do that. Whatever I explained, is it clear to everyone? I specifically said, right? I'll show you what is discovery, what is assessment. So here I'm in. Do you have any questions based on what I explained now? इसमें कोई question है क्या? I'll explain it. Assessment, discovery, वो detail में हमको करना है. Any questions on these points which I just shared? कि उसमें पेड कौन सा है, फ्री वाला कौन सा है, कैन वी यूज इन कॉम्बिनेशन, कोई कंडीशन है? आर यू गाइस क्लियर ऑन दीज टॉपिक्स? Yes, sir. Any doubts, any questions guys on this topic, specifically on this one? I'm sure you guys will have many questions. Assessment क्या है, discovery क्या है, how is it? We're going to cover everything. I want to start it from basic कि tools किस तरह के होते हैं, कितने हैं, paid कौन सा है, free कौन सा है. You should know that first. So is it clear guys? Is it yes, no, maybe? Yes, sir. What about others? Ashar, is it clear? Nazdeen, is it clear? Sufyan, Huzaif? Yes, way so far it is clear. Okay, so now if I ask you that I do have a project with us where client has done the assessment already and you guys just want to do, you guys are being hired just for the migration, right? And client has used Current for their assessment. But we as a vendor, we do not want to spend money because we are being paid a lump sum amount from client. Okay, we are being paid. So ये हमारा काम है कि कितना सस्ते में उसको अच्छा काम करके दे. तो जितना हम कम paid services use करेंगे उतना हमारा ज्यादा मुनाफा होगा. So now the question is, client has done the assessment using Current. What do you think we should use and complete the migration? What can we use technically and from the business point of view? Azure Migrate. Yes, Azure migration tool. So is this understanding clear? This is what I was trying to ask. I know you do not know, as of now, you don't know the assessment and everything, but is this point clear to everyone? Yes, sir. Okay. So also those current and other softwares come under ISV. Yes. And What is sir, ISV? with Independent Vendor software software vendors. vendor. Yes. vendor. Are those paid or free? Those are paid. Paid. Yes, those are paid. Okay. Yes, guys. Someone was asking something. Yeah, so with current like assessment, and we can do both, right? Assessment and migration. Yes. Okay. Look at this. Here you will see the tools which are supported for assessment. Okay, these are assessment tools. यहाँ पर भी current है. And these are the tools which you can use for migration. यहाँ पर भी current है. Okay. Clear? Yes, sir. Okay, now let's talk about migration. What exactly migration is. So we'll start from scratch, छोटे level से शुरू करते हैं, then we'll go till machine level. So one thing I told you, what is migration? Even if you're moving your machine from one resource group to another resource group, that is migration. If you are moving your machine from subscription to another subscription, that is migration. You're moving your data from one storage account to another storage account, that is migration. Everything is migration. You're moving your machines from AWS, from GCP to Azure, it is migration. You're moving your machines from on-prem to Azure, it is migration. From vSphere or Hyper-V, everything you're moving, any machine or any data or anything, it is migration. However, when an interviewer is asking, it is implied or it is understood that he's talking about, he or she is talking about on-prem machines movement to Azure. Now, at on-prem, it could be physical vCenter or Hyper-V. It's same thing. But on-prem say
ये मूव अज्योर पे मूव करना, उस माइग्रेशन को ज्यादा क्वेश्चन में पूछते हैं, राइट? सो डू नॉट अज्यूम के वो यही पूछ रहे होगे, मे बी विद इन अज्योर पूछ रहे होगे, अज्योर मूवर रिसोर्स मूवर का ऑप्शन मत दे देना। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी माइग्रेटेड? मशीन्स कैन बी माइग्रेटेड। व्हेन आई से मशीन, मशीन और उसकी साथ में लगी हुई हार्ड डिस्क दोनों भी माइग्रेट हो गए। व्हेन आई से माइग्रेट, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस? लिटरली वहां से कोई फिजिकल मशीन उठ के यहाँ पर आ सकती है? डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? लेट्स से दैट आई हैव, this is my on-prem data center, it's my data center building. I do have racks here, and this is Azure. Okay, this is my on-prem data center building. This is my cloud. In our case, we'll talk about Azure. यहाँ पर मेरे पास रैक लगे हुए इतने सारे, and I do have some physical server on this, जिसके ऊपर डायरेक्टली मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है डायरेक्टली। काफी क्रूशियल सर्वर है, सो आई वांट फिजिकल सर्वर, बट देयर आर सम फिजिकल सर्वर जिसके ऊपर मैंने काफी वर्चुअलाइजेशन कर रखा है, एंड देन on top of that I do have virtual machines. Maybe this is vCenter, VMware का जो है, and this is Hyper-V. So I do have virtual machines here, and there I do have physical machines. Okay, this is vSphere. It's a product of VMware. VMware is a company. This is Hyper-V. It is a product again, and the company is Microsoft. And let's say these are physical machines. These are physical machines. Okay. Now if I say migration, as of now you have understood when I say migration, उसका मतलब होता है यहाँ से machines को उठाकर वहां पर ये करना. So now you tell me, this physical machine, do you think this will literally go from here, will copy and paste, या फिर इस machine को उठा के हम Azure में रख देंगे? और how do you think will work when I say migration? See, I have already given you hint. We have done backup, restore, we have done ASR. Think about it and then answer. I'm not asking it blindly. Day one पे question नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप कोई भी आंसर दे दो तो it's okay. But I'm expecting a logical answer now because you know stuff by now. So what your logic says? Now when I say about migration, exactly क्या होता होगा? सोहेल, मैं ट्राई कर सकती हूँ। Yes. जैसे कि आपने बताया कि ऑन प्रीम के ऊपर फिजिकल सर्वर्स है, राइट? और जब हम उसको ऑन प्रीम से अज्योर के क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करेंगे, तो जो भी सर्वर्स के वर्चुअल मशीन है वो मतलब जो डेटा है वो वर्चुअल मशीन पे सेटअप होगा, और जो डेटा है वो मतलब कि माइग्रेट होगा। जो प्रोडक्शन सर्वर है, जो डेवलपमेंट सर्वर है, ये सारे जो सर्वर्स है वहां पे माइग्रेट हो जाएंगे अज्योर क्लाउड पे। So are you saying that we should create virtual machines first on Azure Cloud and then move the data? सबसे पहले तो आपने को मतलब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन सर्वर कौन से हैं जो सबसे ज्यादा That doesn't कॉम्प्लेक्स matter. है। Forget it. Let's say all our test servers. The logic remains same behind be it test, development or prod. Criticality and crucial, that's a different thing. Some servers are crucial, some of them they are critical, less downtime, etc. But logic them behind all of them, it's same. So are you saying that we need to create virtual machines on Azure first? Others also can try, guys. Sir, can I try? Yes, please. Yes, sir. Maybe in migration, ASR, or like it will be like it will replicate or take backup at the Azure site with the help of internet. Right, but We why don't need maybe? physical. Exactly, that is No, correct. no, But I'm why sure. maybe? That is the It will exact be. answer we have. And I've told you also, right? While discussing a disaster recovery in ASR, I have told you guys many times that exactly the ASR will be used. ये Azure Migrate tool जो है, this is just a GUI for us. Backend में इसी तरह से exactly ये होगा, आपका ASR ही setup होगा. And now, if you guys remember, if I say ASR, can it be done only for Azure machine, Azure site recovery?
Can I set up ASR or DR for a machine which is there on my on-prem? Forget my Azure migration. Let's go back to DR. Can I set up a DR for a machine which is hosted on on-prem? Yes, guys. Yes, no. Yes, we can. Yes. Yes. Yes, well, Why so silent then? It's very simple question. We just discussed it yesterday. I showed you that, right? बैकअप भी ले सकते हैं मशीन्स को एंड आई स्पेसिफिकली यूज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो कि अगर वहां से नहीं होगा तो देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट डीआर सेटअप भी जो है ना कई बार यू विल सी कि आपका एक्चुअल सर्वर जो अभी हमने देखा था एक्चुअल सर्वर अज्योर में था ईस्ट यूएस उसका डीआर साइट था वेस्ट यूएस राइट दैट्स व्हाट वी हैव सीन वंस बट कई बार आपको ये भी देखने मिलेगा कि जिनके एक्चुअल सर्वर ऑन प्रिम पे है और डीआर साइट उन्होंने क्लाउड को बना रखा है कि मेरे एक्चुअल डेटा सेंटर को अगर कुछ होगा तो देन ये क्लाउड पे चले गए उसके बाद दैट विल that is also a very normal case and you will see it very frequently, right? So which means you can synchronize your servers which are there on-prem, you can synchronize them. So same logic will be applied when I do the migration task and everything. At the back end, ASR will work, as your site recovery will work. All these servers, be it physical or be it virtual servers, ये सारे के सारे यहाँ पर replicate होने शुरू हो जाएंगे. And when I say server replication, what do you think will happen? क्या चीज replicate हो रही है when I say server replication? Disk. Yes, it's Data. only a disk. Yes. Only a particular disk is being replicated, nothing else. यहाँ से literally RAM उठ के यहाँ पर नहीं जा रही है. यहाँ से literally आपका CPU उठ के Azure के CPU में नहीं जा रहा है. Azure has its own RAM, its own CPU. But when we do it using Azure Migrate tool और कोई भी tool, then इस पे जो RAM वगैरह लगा था उस सब का information भी capture होता है. This is not purely ASR. सिर्फ ASR होता तो क्या होता? इनफैक्ट एएसआर में भी वहां पर हमको ऑप्शन मिलता है साइज वगैरह चेंज करने का, वो तो वहां पर भी है. अज्योर में और ज्यादा ग्रैन्युलर वे में मिलता है. व्हेन यू स्टार्ट माइग्रेशन सेटअप तो आपको पहले ही ऑप्शन बता देता है कि एक द वन विच यू आर आस्किंग असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें पूरे आपके इन सर्वर्स को वो असेस करेगा. ओके ठीक है, इस तरह से है. सो आपके ये जो सर्वर है एक में 32 GB रैम है, इसमें ये है, ये सब वो खुद रिपोर्ट बना लेगा. एंड देन इट विल गिव यू रिकमेंडेशन ऑल्सो कि बेस्ड ऑन दिस सर्विस ऑन प्रेम पे आपके पास सर्वर्स है 32 GB रैम एंड 500 GB हार्ड डिस्क. बेस्ड ऑन दिस द एग्जैक्ट मैच तो कभी नहीं मिलता है Azure में. ओके क्योंकि आप इफ यू लुक एट द साइज यू विल सी 2 GB रैम 5 GB रैम. व्हाट इफ योर ऑन प्रेम सर्वर हैज 3 GB रैम? एग्जैक्ट मैच तो कभी नहीं मिलने वाला है. बट योर असेसमेंट रिपोर्ट विल गिव यू द बेस्ट मैच कि दिस इज द बेस्ट मैच वी हैव फॉर दीज सर्वर्स. ये जो सर्वर्स है ये इस साइज के हैं और उसका बेस्ट मैच Azure पे होगा ये साइज. यू एक्सेप्ट दैट तो आपके अपकमिंग मशीन्स की जो साइज है वो ऑटोमेटिक डिसाइड हो गई है. कि नाउ साइज हैज बीन डिसाइडेड. डिस्क आपकी ऑलरेडी रेप्लिकेट हो रही है, ये डिस्क यहाँ पर रेप्लिकेट हो रही है मतलब डेटा है, मशीन का साइज डिसाइड हो गया. सो व्हेन यू क्लिक ऑन माइग्रेट, फाइनल माइग्रेशन, माइग्रेशन में भी टेस्ट माइग्रेशन और फाइनल माइग्रेशन होता है. तो यहाँ से मशीन बंद होगी, इट विल बी शट डाउन और यहाँ पर उसी डिस्क से मशीन एक अप हो जाएगी. और कौन सा साइज लेगा? साइज जो हमने असेसमेंट में डिसाइड कर रखा है वो साइज उसको अपने आप ले लेगा. असेसमेंट में साइज कहाँ से डिसाइड होगा? बेस्ड ऑन दिस मशीन. इन मशीन पे वो पूरा असेसमेंट जब रन होगा सो Azure असेसमेंट विल नो कि एग्जैक्ट मशीन इतनी है. एंड इट इज वेरी एडवांस्ड. इसको सिर्फ ये नहीं पता होगा कि आपके इसमें 32 GB रैम है एंड 100 GB का हार्ड डिस्क है. This report will also tell you that out of this 32 GB, from last 30 days, if you run this assessment for 30 days, they'll say for last 30 days, out of this 32 GB, you are hardly using 4 GB. So if you want the exact match, here I have 32 GB wala server. But if you want my recommendation, Azure portal will tell you this. Azure portal will share this with you in report. If you want my recommendation based on your usage, your job will be done in 8 GB also, and you will save a cost on this. तो वो भी रिपोर्ट में आता है. And it's up to you then, what do you want to decide? What do you want to finalize? It could be the case कि इस महीने ट्रैफिक कम था, but I know my server, I know my application, मुझको 32 GB ही लगने वाला है. So I don't want to accept Azure's recommendation, and user will have that option. And if I think यार साल भर से ऐसे ही चल रहा है, यही पैटर्न और यही चलने वाला है, then why should I pay for 32 GB? Let's move to 8 GB. Both things are in your hand. But ultimately backend में आपका यूज हो रहा है Azure Site Recovery.
सर्वर्स आर बीइंग रेप्लिकेटेड, इनका जो डिस्क है, हार्ड डिस्क, डेटा डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, जितना भी है सब कुछ यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है, यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है, और ये साइज का भी असेसमेंट में आ गया। द मोमेंट यू क्लिक ऑन माइग्रेट, these machines will be shut down. एक final sync फिर से होगा, like we saw in Azure Site Recovery, because it is Azure Site Recovery in the backend. एक और final sync होगा, और ये मशीन यहाँ से बंद होके यहाँ पर अप हो जाएंगे। IPs वगैरह वो सब कैसे मैनेज करना, विल सी दैट स्लोली। बट कोर ऑफ द माइग्रेशन, डिड यू अंडरस्टैंड कि कोर माइग्रेशन किस तरह से होता है? प्रोसेस वी आर येट टू डिस्कस, धीरे धीरे हम देखने वाले हैं कि पहले कौन सा होगा, आईपीएस किस तरह से यहाँ पर आएंगे, वो सब विल डिस्कस कि यहाँ पर माइग्रेट करेंगे तो वर्चुअल नेटवर्क अपने आप बनेगा या हमको बनाकर रखना होगा, लोड बैलेंसर बनेगा या बनाकर रखना होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, बट इज दिस क्लियर, द कोर और द बेस ऑफ दिस, कि ये माइग्रेशन में मशीन इस तरह यहाँ पर कैसे आ रही है, यूजिंग विच सर्विस? Azure Migrate. Behind it, Azure Application. ASR. ISV, no, ASR. definitely not ISV, guys. ISV, these are alternate of your Azure Migrate tool. Yes, ASR is the SAR. service which is being used at the back end. Clear है यहाँ तक to everyone? Sufyan, is it clear? Yes, well, bhai. Others, guys, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is how it is going to work. Now, it's up to you कि आपको मशीन का साइज वगैरह करेक्ट लेने के लिए कितने दिन तक इसको रन करना है असेसमेंट को। if you do it only for half an hour, वो half an hour का डेटा पे आपको जज करके रिपोर्ट बताएगा। if you run it for 30 days, it will run it for 30 days, उसके बाद रिपोर्ट बताएगा कि 30 days में किस तरह का आपका मशीन का यूटिलाइजेशन पैटर्न है, what are the things you need to consider, ये सारी चीजें उसमें ये कर लेगा। and this is how you can migrate your machine, the logic behind it, process we are going to see. So I hope this is clear to everyone. Yes, well, bhai. Okay. Now these are your machines, guys. Okay. We also have data. We also have web app. By the way, web app वगैरह में जो है ना, ये सब कुछ में प्रोसेस एकदम सेम ही होगा, सब पे असेसमेंट रन किया जाएगा। ऐप में क्या होता है, if there is an application on your which is hosted on your on-prem, so ultimately it is a server. I told you, right? एक एप्लीकेशन को भी, एक वेबसाइट को भी आप एप्लीकेशन ही बोलते हो, और वो वेबसाइट्स किस पे होस्टेड है? सर्वर पे ही होस्टेड है। So even if I say कि मुझको एक ऐप माइग्रेट करना है, ultimately you are migrating that server. When I say I want to move server, it is a server. When I say I want to move web app, it is a server. App भी move कर रहा हूँ तो server ही है। I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Like in Yes. Azure, we Yeah. have an option that I can have Azure function app, web app, or Azure other apps which we discussed, function app, web app, logic app, right? We can have this without servers. Ultimately, उनके पीछे भी server होता है, but we don't have to worry about them. So we can have these service without server. I can host my application, my website without having a server. This is on Azure. But when I say I'm moving an application from on-prem, तो on-prem पे web app वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर when I am saying there is an app on-prem, so there has to be a server. So ultimately, if I tell you that I'm moving an application from on-prem to cloud, so definitely there is a server. You are moving a server, nothing else. Is it clear? Yes. Yes. Now, based on that server, Azure पे आपको server लेना है या web app लेना है, that is a different thing. But on-prem से आप हमेशा एक server ही move कर रहे हो, तो यहाँ तक process same रहेगा. Okay. Now, so if I go back here, okay, server, web app, it's same thing. Database, again, you call it database. After all, database होता किस चीज पे है? On-prem में database किस चीज पे होता है? When I say database, what do you understand? Disks. और disk किससे attach होती है? Server. Server. So database भी ultimately आपका server ही होता है. If you go back here to the visual diagram, 3-tier application, this is our database. But what am I showing here? Server, a virtual machine. इसके ऊपर मैं SQL इंस्टॉल कर दूंगा और डेटाबेस बन जाएगा, Oracle इंस्टॉल करूंगा और डेटाबेस बन जाएगा. It could be Linux, उसके ऊपर Oracle. But ultimately what is it? It is again a server. It is like a virtual machine. तो आप servers बोलो, आप database या web app, same thing, ये सारे के सारे server ही है.
Is it clear? Yes, sir. Now, it's not necessary that all the time you are bringing your data from on-prem. You can bring your data from another Azure tenant to your Azure tenant, or AWS to your Azure tenant, और GCP to your Azure. वहां पे आपको सिर्फ डेटाबेस भी मिल जाएंगे, आपको वहां पर वेब ऐप भी मिल जाएगा. इफ यू वांट टू डू जस्ट वेब ऐप, आपको वेब ऐप भी मिल जाएगा. कहीं और कोई कंटेनर है उसको आपको मूव करना Azure पे, वो भी मिल जाएगा. बट वी आर नॉट गोइंग थ्रू दीज डिटेल्स. वी विल जस्ट बी लुकिंग एट सर्वर, डेटाबेस एंड वेब ऐप. इसमें हम एक सर्वर माइग्रेट सीख लेंगे, बाकी अपने आप कवर हो जाता है. And then there is purely data migration. Okay, so we'll start with data migration and then we'll go with server. Data migration mein what all option do we have? First option is, what is the first option? I shared it with yesterday, that I can go to storage. I can create a storage here. I can go to storage, और storage में मुझको मिलता है यहाँ पर आपका data migration tool. Okay, 30 seconds are left, guys. Let's take a break of 5 minutes. I'll see you guys, or 3 minutes are enough. I'll see you at 2:45 using the same link. We'll start from here then. Okay.